बस्तन उसके लिए एक रास्ता अख्तियार करने की बात की है। अगर हम ध्यान दें सबसे ज्यादा किस ओर फोकस किया गया है, तो सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ऊपर है, और सबसे ज्यादा अगर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट 2012-13 का बजट है जिसमें कि ग्रोथ रेट को टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं 7.6% के आसपास, जो वर्तमान में इस फिस्कल में 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ के 5.9% रहने की उम्मीद है जिस इस वित्तीय वर्ष की, और जिसको हमने टारगेट किया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5.1%। तो सब सवाल यही कर रहे हैं कि जो 5.1% राजकोषीय घाटे को का अनुमान लगा है अगले वित्तीय वर्ष में, जो टारगेट किया 5.9%, वो कैसे अचीव हो। Right, so like the finance minister himself, the budget for 2012 and 13 is also very sober. Well, certainly a white paper on black money is perhaps the best way in which Mr. Pranab Mukherjee would have been able to control the outcry against corruption. But the fiscal consolidation and financial inclusion were the keywords in his budget speech, and would certainly indicate as to how the shape of things to come. And interestingly, in fact, the budget, one would say, was not that dramatic, but it is certainly very ambitious. Just to quote the finance minister, the last lines that he said were that whether or not today's announcements make tomorrow morning's headlines matters little, as long as they help in shaping the headlines that describe India a decade from now. So let's analyze this budget as to whether it's really going to shape the economic future of India for the coming 10 years. And to discuss more on this, we are joined by Ms. Sudha Pillai. She is the Member Secretary with Planning Commission, and Dr. Upendra Das, economist with the Research and Information System for Developing Countries. Welcome to the program. Thank you. Let's start with you, Ms. Pillai. How do you really read this budget? Well, actually, I would agree with the finance minister that he is looking upon the financial year 2012-13 as a year of recovery. And in fact, the targets for growth are very modest at 7.6%, because last year when we began to look at the midterm appraisal and the approach to the plan, remember that this budget also marks the first year of 12 5-year plan. So if we split 10 years into 5 years, certainly by 2017, we should have been very clearly on the path not only to recovery, but to going back to a high growth trajectory. So if you look at and analyze the budget, what you find is that he's left no sector unattended, whether it's irrigation and its concomitant prerequisite irrigation. And if you look at infrastructure, the uniform definition of infrastructure, and he's used taxes and duties and permission for ECB as instruments of growth. I think these are unique. One thing was very clear from the finance minister's speech. The first thing that he said was it was a difficult year for the government, at least in terms of achieving the growth target. You're absolutely right. Dr. Das. You see, I would like to situate this budget in a larger framework, and perhaps in the history of Indian budget making, this was possibly not many times this has been referred to, that today India as an emerging economy in the Committee of Nations, that's where the budget began from. And the negative sentiments that prevailed as the aftermath of the financial crisis and its impact, and that is why the responsibility that India has to play in a responsible way in global negotiations and determining the course of global economy as serving as an engine of growth. That was the preamble of the finance minister, and I think that is very important to highlight. Although the tenor was in the context of a negative sentiment prevailing in the global economy, be it financial crisis, be it food prices, be it oil prices. But one very important statement that he made, which perhaps many times it is often not referred to, is that today India's trade performance, both on the fronts of exports and imports, it's phenomenal. I mean, it's amounting to around 650 billion US dollars. And if you see the share of just trade. But we have a terrible current account deficit. Yes, I'll come to that. That as a proportion of our GDP is more than 50%. So that means that today India is much more globally integrated in the realms of trade in goods and services, and finance is definitely another thing. And what is more important, that India has been able to achieve diversification of its
markets for its exports as well as sources of imports. Okay. And almost 57% of that is happening in Asia. Okay. Now, if we situate this budget in that context, then you have to see what are the domestic initiatives which is actually having implications both positive and negative in the global ओके context. सुधा पिल्लाई जी, क्योंकि ये 12 5 ईयर प्लान का पहला साल हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो मंत्रा है 12 5 ईयर प्लान का, वो मंत्रा है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और हमने 9% ग्रोथ रेट की टारगेट रखी है। ये पूरा बजट एक तरह से आपको लगता है ये संतुलित कहा जा सकता है कि हर तरह से संतुलित? आपने खुद कहा कि हर सेक्टर को उन्होंने कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बात की। जी हाँ, एक्चुअली मैं इसको 2 बॉक्सेस में डाल रही थी अपने लिए, और वो बॉक्सेस जैसे उनको इस तरह से कहा जा सकता है, पीपल लाइक देम एंड पीपल लाइक अस, एंड आई डोंट नो वेदर वेयर वी आर 4 of us here, but for agriculture, for people who are actually going to be first entrants into equity markets, for people in small towns to be able to participate in IPOs, he has made provisions. That's For right. recapitalization of RRBs. He has made provision, I think, of a very high credit target for agriculture and like interest 5,000 subvention for short-term crop loans. That's right. He has made provision for NABARD, for the, he 10,000 says that the crores weaker he will RRBs, he is going to continue to take care of them so that, the agriculture Agriculture sector- was the thrust agriculture area, and so sector was infrastructure. And also self-sufficiency in urea. That's right. And he's talking of subsidies vis-a-vis that self-sufficiency. So I think if you read very deep into this budget, what you find is that the more you read it, the more you realize that it's a very big budget. जितना ज्यादा There are people like them also. ज्यादा समझ में आएगा। People like लेकिन जो them. सबसे जरूरी बात है कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, जो इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है इस वित्तीय वर्ष में, जिस 4,75,000 करोड़ ये टारगेट था, जिसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसे 5,75,000 करोड़ कर दिया गया है। जो समय से पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट का, उसको 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन की बात कही गई है, और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग फार्मर्स जो वेयर हाउस में अपना सामान रख सकते हैं, खासकर पोस्ट हार्वेस्ट की बात, उनको भी इंटरेस्ट सब्वेंशन की बात कही गई है। लेकिन हम सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पे कि आखिरकार इस पूरे बजट से आम लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आज पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पर टिकी रही। प्रणब मुखर्जी का बतौर वित्त मंत्री ये 7वां बजट था, जबकि यूपीए 2 का 3रा। इस बजट में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी नरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले आवंटन से करीब 7,000 करोड़ कम है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा और कृषि के बीच बेहतर सहयोग की बात भी की गई। अच्छी बात यह कि PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में 20% का, जबकि ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम में 27% का इजाफा किया गया है। घोटालों के लिए बदनाम NRHM के बजट में भी इजाफा हुआ है। पिछली बार के 17,840 करोड़ से बढ़ाकर 20,542 करोड़। कुपोषण खत्म करने का दावा करने वाली 35 साल पुरानी योजना ICDS के लिए इस बार 58% का इजाफा करके 15,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए बजटीय आवंटन में 18% का इजाफा है। खासतौर पर पूर्वोत्तर में हरित क्रांति के लिए पिछली बार के 400 करोड़ में भारी इजाफा करके 1,000 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन देश भर में भंडारण के लिए सिर्फ 156 करोड़ हैं। किसानों को दिए जाने वाले कर्ज के दायरे को भी काफी बढ़ाया गया है। पिछली बार के 4,75,000 करोड़ को बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी है, जबकि रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ का प्रावधान है। इन सब के बीच आयकर की मौजूदा सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। हालांकि उम्मीद इससे कहीं ज्यादा की थी। उधर 17 शीर्षों वाली सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी सेवाओं पर कर का प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। तो प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा उनके प्राथमिक केंद्र में रहेगा, लेकिन खासकर कृषि क्षेत्र को लेकर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस देश में 1 अरब 21 करोड़ आबादी का अगर पेट भरना है तो आपको सीधे तौर पर किसान और खेती पर आप निर्भर हैं, लिहाजा उनकी प्राथमिकता में कृषि और किसान दोनों हैं। बहरहाल लेकिन सवाल उठता है कि इन सबसे निकल कर क्या आता है? क्या जो फूड इन्फ्लेशन है, जो सबसे बड़ी चुनौती रहा इस वित्तीय वर्ष में सरकार के लिए, क्या वो फूड इन्फ्लेशन आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार को परेशान नहीं करेगा? सुधा पिल्लाई जी, एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग सीजन था, आपने देखा वेजिटेबल के दाम भी कम हुए, फ्रूट्स के दाम भी कम हुए, अब धीरे धीरे वो दाम बढ़ गए। देखिए, एक तो सीजनल
इंक्रीजेस होते हैं, हर साल होते हैं। पर सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट जो है, जो सप्लाई साइड की तरफ जिन्होंने एफएम ने इशारा किया है, वो है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी पुअर है, कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत पुअर है। और एक बात जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, जिनमें संशोधन आने की बहुत ज़रूरत है। और इस मामले में राज्यों के साथ सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। कई राज्य ऐसे हैं जो अपना पीडीएस को और सप्लाई साइड को अच्छे से मैनेज करते हैं, और उनके जो उदाहरण हैं वो उनको हम मद्देनज़र रखते हुए ओवरऑल जैसे कि देश में, पूरे देश में इम्प्रूवमेंट्स लाने की हम कोशिश करते रहते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट्स जो है, अगर आप देखें वीजीएफ वगैरह में जो डाला गए हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटी, साइलोज एक्सेट्रा, whether it is cereal storage or other kinds of storage for dairy, all these have to be taken care. One of the most intractable problems of the Indian economy, inflation and fiscal deficit. We found a clear mention of that in the finance minister's speech. He did indicate as to what was the target and where do we exactly stand. What would you like to say about the measures that have been announced today, the overall speech of the finance minister? Yes, his emphasis on both agriculture and infrastructure, as you very rightly highlighted, is by itself, in an absolute sense, also, were imperatives. In any case, one would have recommended that this focus should have been there. But in the context of inflation and also fiscal deficit, if you see, the measures that he has tried to provide to improve supply side capacity, supply side responses, especially in the agriculture sector, and when you have investments in infrastructure, then infrastructure is like a cutting edge, input to any industry or service or agricultural or economic activity. So I guess both these are going to provide big push from the supply side, and which will have perhaps tackle the inflation part. अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें जी, इस वित्तीय वर्ष पे जो ग्रोथ रेट हम 6.9% का देख रहे हैं, एग्रीकल्चर ने अच्छा किया 2.5% के आसपास। अब अगर सर्विस सेक्टर की बात करें 9% से ऊपर था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 4.5 to 5% के आसपास था, जिसको कहा गया कि इसकी वजह से ये 6.9% हमारे ये आंकड़ा देखने को मिला है। इसके लिए आपको लगता है इस बजट में कुछ खास है, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो चाहे वो माइनिंग है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे नेचुरल गैस है, जो कोर सेक्टर है हमारा, वहाँ कुछ बढ़त देखने को मिली। जी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात की, उन्होंने ये बात की क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि सेवा का क्षेत्र जो है जीडीपी में बहुत हाईएस्ट शेयर है उसका, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है, क्योंकि आप अगर जैसे पॉपुलेशन देखते हैं वो जो डिपेंडेंट हैं अलग दूसरे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से उनका ये कहना कि हम इंडस्ट्री का शेयर 25% जीडीपी का ले आने की कोशिश करेंगे, 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्लस्टर्स की बात उन्होंने कही है, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की बात कही है, और फिर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जैसे आप अगर सिविल एविएशन को लें, पावर को लें, इवन कोल सेक्टर को आप लें, उसको आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंपोर्ट टैरिफ के थ्रू भी उसको टैकल करने की कोशिश की है, और उन एविएशन सेक्टर फॉर इंस्टेंस उसको जो कमर्शियल वार्निंग के थ्रू जो है उसको और टर्बाइन फ्यूल की जो डायरेक्ट इंपोर्ट की बात हुई है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो देयर आर सीरीज ऑफ मेजर्स विच आर एक्चुअली ट्राइंग टू एड्रेस बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग में जो सुधार होगा, वो जो आपका प्रश्न है कि वो उतना ग्रो नहीं किया अभी तक, वो बहुत कारगर सिद्ध होगा, combined with the capital market related, some of the measures that he has taken, because that is going to spur investments in the industrial sector. Interesting part here is, of course, investment in infrastructure and the whole sector is certainly very important. But apart from that, the other aspect that Dr. Das was talking about, creation of jobs. Well, there was a mention of the demographic dividend, how crucial it is going to be, especially looking ahead and having being one of the countries having the largest population of younger people in the country. How do you really look at the employment-related the announcements that we saw, whether it is to do with National Rural Livelihood Mission or it is to do with National Skill Development Program, which certainly is an initiative in that direction? Well, I could speak on it for about 5 minutes, but I'm not going to do so. I've actually worked on the National Skill Development Policy as Secretary for Labour, and also we have put in place a National Employment Policy, which has not yet got government approval. But very happy, very gratified actually to see these messages about both skill and employment, because the
the jobs pact that we, under ILO we said, the global jobs pact we said, actually we said it's not that growth increases or growth creates employment, but actually employment creates growth. So in fact, if you see, despite India's global connections and India's place on the global high table, we have actually a finance minister who is looking at the domestic consumption, putting money and income in the hands of people. That will come only through skill and employment. There is no other way. So there are messages, but of course I think we need to surprise and delight the finance minister more by actually creating much more and giving him more data about the various skill development initiatives, It's both very- government and private. But it was probably a surprising move to have It's a seen very- that the NREGS, the allocation for NREGS has come down when it comes to the other rural development schemes, for example. There is some You sort see, of increase. this is actually ironically in an economy which is doing well, NREGS should actually be doing less well because it's a social protection measure. It's not a career. It's not an employment opportunity. It is actually a fallback option. That if you have no employment, you go and ask for work under NREGS and you get that work. लेकिन मैम जिस तरह के टारगेट आपने इंदिरा आवास योजना में आपने कहा 2017 तक आप हर गरीब को एक घर पहुंचा देंगे, आपने PMGSY में टारगेट रखे, आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में टारगेट रखे, पावर टू ऑल 2012 तक। क्या ये बजट पर्याप्त है जो टारगेट हमने फिक्स किए उन टारगेट को अचीव करने के लिए? देखिए, जहाँ तक इंदिरा आवास योजना का सवाल है, इंदिरा आवास योजना एक कंटिन्यूड एफर्ट है जो रहता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन होती है, पंचायत के पास भी पैसा है और उसमें जो बेनिफिशियरी है वो भी पैसा डालता है। इंदिरा आवास योजना एक बहुत ही अच्छी, उम्दा और सक्सेसफुल स्कीम है जिसके लिए कुछ समय बाद क्या होता है, सप्लीमेंट्री में उसका एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे झारखंड के लिए एलोकेशन HM ने बढ़ा दिया था, जब वो झारखंड गए उन्होंने 1 लाख मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना में उन्होंने अनुमति दी, फिर उसमें वो बजट बढ़ जाता है। तो ये नहीं कि बजट ओवरऑल देखिए उनका बजट देखें 4,500 करोड़ कम हुआ है अगर इस साल को अगर हम एस्टिमेट उसका मिला, मैं बजट एस्टिमेट टू बजट एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ, 4,500 करोड़ कम एलोकेट हुआ है। जी हाँ, उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो खर्चे के मुताबिक भी जाता है। अगर आपका जो व्यय है और ये जो महात्मा गांधी NREGS है उसमें सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स रहे हैं, उनको दूर किया जा रहा है, उससे वो जो खर्चा बढ़ता है, क्योंकि कोई भी वित्त मंत्री ये नहीं चाहता कि मनी को लॉकअप कर दे, और अगर वो लॉकअप कर दी जाती है और उसमें खर्चा नहीं होता, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि मैं रोड्स के बारे में जरूर ऐड करना चाहूंगी कि रोड्स के लिए जितना कम करें उतना कम। बिल्कुल, और ज्यादा देखिए जो 24,000 करोड़ शायद जी हाँ, पर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में और फिर वो बाकी कुछ प्रोग्राम भी हैं जिनमें there is an interesting aspect that we saw, that is the expenditure reforms basically, which found a clear mention in the finance minister's speech. He said that there will be a central plan scheme monitoring system to ensure that all the plans that are being implemented from that have been launched from the center side, of course, implementation bottlenecks are there. That would be checked. There will be constant monitoring and tracking that will be done. Towards a very reformist, one would say, certainly it doesn't look like a very much reformist budget, but of course, on the governance issues, some things were very clear. Very clear, and I must mention that, you see, budget outlays are one aspect, and we are all aware that, when the outlays do not actually reach the targeted groups, the outlays actually do not mean much. So his own emphasis on implementation, whether it is through the Nilkani program or through emphasis in terms of diversification and productivity and even research in agriculture sector, which is these are some of the things which you may not see it in real monetary terms, but in terms of their long-term impact from the implementation. जिस तरह के रिफॉर्म मेजर्स की बात की जा रही थी सुधा जी, कि कहा जा रहा था मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI, इंश्योरेंस में FDI, तमाम तरह की बात की जा रही थी ताकि लोग आके इन्वेस्ट करें, कोई बोल्ड डिसीजन आपको दिखा इस बजट? देखिए, सबसे पहले तो आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट दिस सेंट्रल प्लान monitoring thing is a planning commission initiative, and we are very gratified to find it in the budget speech. It's actually an outcome of a high-powered committee chaired by Dr. Rangarajan,
which gave its report, and this is the first recommendation which is getting operationalized, for which funding has been provided. Now, in terms of the world, I think I would say I've never seen a budget in which ACB gate has been opened. And the second thing you find, the harmonized list of infrastructure, which I think we finalized only about 15 days back. This, which includes irrigation, dams, channels and embankments, soil testing labs, and then of course you have the infrastructure debt fund, for which money has now been allocated. And the most interesting part I thought was this, for the FDI, the preparatory steps, that you have that accepted price, that initiative, which actually makes the tax implications very clear for a foreign investor. So I think these are very subtle and they need to be understood. That's right, but that's all we have in this particular segment. Thanks very much, Ms. Pillai. Thanks very much, Dr. Das, for talking to us. We'll take a very short break here, but after the break, we will have a conversation with Dr. C. Rangarajan, the head of the Prime Minister's Economic Advisory Council. He'll be joining us and talking more on the state of the economy.